Hello guys, I hope you are doing well. I welcome you all to my channel Smart Gen 20. Here we are taking the classes for NEET, JEE and IIT aspirants, also for 12th standard and 11th standard for the two subjects that is physics and mathematics. जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर लाइट डिस्कस कर रहे हैं and till now we have discussed the mirror formula for concave mirror, but today we will derive its relation for convex mirror. concave mirror में आपने देखा होगा तीन केसेस बनते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर द ऑब्जेक्ट ए बी एंड फॉर द वर्चुअल इमेज। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जैसा कि आपको पता है बस दो ही पोजीशन पे हमारी इमेज बनती है। सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर, सॉरी, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है एम डैश। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हुआ। इफ वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट ए बी हियर, ठीक है, लेट अस दिस बी आवर ऑब्जेक्ट ए बी। अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। बट फॉर ऑल द केसेस चाहे हमारा ऑब्जेक्ट किधर भी हो फ्रॉम दिस वे, जहाँ चाहे हम इसको क्लोज लें या अवे, नॉट एट द इन्फिनिटी, हमारी जो इमेज बनेगी फोकस और पोल के इन बिटवीन बनेगी। सो देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर द कन्वेक्स मिरर, देयर इज नॉट ऑल द थ्री कंडीशंस फॉर द सेपरेट पोजिशंस। सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल जो हम लेते आ रहे हैं, लेट दिस बी द पैरेलल रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चा। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हम पैरेलल रे ले रहे हैं। इस पैरेलल रे को रिफ्लेक्ट होना है इन सच अ मैनर दैट जब हम इसको बैक ट्रेस करने वाले हैं ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, ठीक है। फोकस पे ये बैक ट्रेस होगी, लेकिन एक्चुअली दिस विल रिफ्लेक्ट इन दिस वे। तो अगर हम और एक रे लेते हैं इन सच अ वे दैट it will seem to pass through the center of curvature C, तो अगर ये इंसिडेंट इस तरह से आ रही है इट विल गेट रिफ्लेक्ट बैक अगेन। तो सॉल्व ओवर दिस मिरर फॉर्मूला वी आर टेकिंग अनदर रे हिटिंग एट द पोल, ठीक है। इसको भी रिफ्लेक्ट किधर से होना है, इन दिस डायरेक्शन होपफुली, ठीक है बच्चा। तो ये जो तीनों रे हैं कहाँ पे मिलने वाली है, ऑन दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल बी इमेज ऑफ ए डैश। जब मैं ज्वाइन करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो इमेज बनेगी बी डैश की, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं बच्चा, ये जो ये रे है इट इज कमिंग लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइक दिस। तो ये और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, मींस एंगल दिस will be equal to angle this. Why? They are intersecting at a common point, so this angle will be equal to this angle, ठीक है बच्चा। We know this is the incident ray, this is the reflected ray, this two will be angle 3 because if this is I, this will be R, तो ये angle 2 is equal to angle 3, so indirectly we can say that angle 1 is equal to angle 3, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते आ रहे हैं, वी आर टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लेट अस टेक द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, दिस ट्रायंगल, एंड ए सी बी, राइट। सो वी कैन से दैट एज ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी is similar to A, B, C. Why? Because this angle is common to both the triangles. ये वाला angle 90 degree, ये भी 90 degree. We can conclude this triangle and this whole big triangle are similar. So we can take the ratio of their sides. Here we can take A dash B dash over AB
will come out B dash C, B dash C and BC, BC। ठीक है बच्चों, इसको सिंपलीफाई करते हैं, B dash C को देखते हैं, B dash C will be equal to what? This pole PC whole length from pole to center of curvature minus PB dash. This will come out PC minus PB dash, and this BC will be equal to PB plus PC, PB plus PC. Simplifying more, we can get this PC, P to C, radius of curvature. According to sign convention, this will be positive. This is the direction of incident ray. This is the direction of measurement. So R will come out positive. This is the minus PB dash. P से B dash तक कौन सी डिस्टेंस है बच्चा? इमेज डिस्टेंस V, ठीक है। और ये जो इमेज डिस्टेंस है, दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव, सेम मेजरमेंट डायरेक्शन एंड इंसिडेंट डायरेक्शन। सो V here now again PB, what is this? This is object distance, but according to sign convention it is opposite to the incident ray, ये हमारी आएगी नेगेटिव, plus PC again, PC radius of curvature but positive. So we can say this is equation number first, ठीक है। This is equation number first. Here we can also take the two triangles, that is A dash B dash P, this triangle, A dash, because triangle A dash B dash P is similar to ABP, triangle ABP, ठीक है। क्यों सिमिलर है? दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, पहले ही मैंने प्रूव किया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग at a common point, right? And this angle is always equal to this angle, angle of incidence and angle of reflection. So we can take also the ratio here, that is A dash B dash over AB. A dash B dash over AB will come out this B dash P, B dash P divide this BP, BP, right? Simplifying more, B dash P, B dash P, again this will be equal to image distance but direction is positive, so V, ठीक है। BP, BP, what is this? It is the object distance but negative, that is U. So here we can conclude that A dash B dash over AB will come out minus V over U. This is our second equation, ठीक है। From second and first, see, left hand side are equal, so right hand side and right hand side will also be equal. We can say here this are from equations first and second, R minus V over minus U plus R will come out minus of V over U. Simplify this. This will become U into R, that is RU, U into V, that is minus UV. Here again VU, minus into minus, plus, that is plus UV. Again RV but minus RV, implies that this UV is here positive. जब हम इसको इस साइड में ले आएंगे it will become negative, or we will take this UV to this side, this is negative, and on right hand side में ये बन जाएगा positive. We will take this RU to the left hand side, this is negative, this will become positive. So we can get RU plus RV will come out
this will go this side, uv, that is twice of uv. ठीक है बच्चा, सो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिली दिस। इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, which implies that ru, ठीक है, by dividing on both sides by, this is equation third, we can take this equation here, that is ru plus rv is equal to twice of uv. By dividing uvr on both sides, we get what we get. Here will come uvr, here uvr, ठीक है, यहाँ पे भी uvr, implies that ru cancel out, यहाँ पे बचेगा 1/v प्लस rv बचेगा 1/u, here again uv cancel out, that will come out twice of r. By replacing this r by 2f, we will get 1 over v, 1 over u is equal to twice of f. As we know that r is equal to twice of f, implies that 1 over v or 1 over u plus 1 over v will come out, 2 and 2 cancel, 1 over f. And this is the required formula for convex mirror. Mirror formula or mirror equation. I hope बच्चा आपको ये समझ में आ चुका होगा. As simply for the convex mirror, वहाँ पे बस एक ही कंडीशन है. For the convex mirror, derive the mirror formula or mirror equation. We are going to draw the ray diagram for convex mirror. For convex mirror, we are taking the object AB at any position. For that object, this ray will be parallel to the principal axis. This ray will be in such a way that it will be backtraced through the center of curvature. This will be reflected at pole and symmetrically reflected back. इस रे को और इस रे को जब हम बैक ट्रेस करेंगे, दे आर गोइंग टू मीट ऑन ए सिंगल पॉइंट, दैट विल बी ए डैश. ठीक है, इसकी इमेज बनेगी. फिर ज्वाइनिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस बी डैश. नाउ वी आर टेकिंग द ट्रायंगल दिस, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है बच्चा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव करते हैं. कैसे? दिस एंगल इज कॉमन, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सिमिलर here. Then taking the ratio, उससे हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलती है. फिर हम ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस, ठीक है, दिस एंड दिस ट्रायंगल वी टेक फ्रॉम दोज ट्रायंगल्स, हमें इक्वेशन सेकंड मिलती है. देन सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी विल गेट दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को लास्ट में हम डिवाइड करते हैं किससे? UVR से, and finally we reach to mirror formula. Hopefully this was a simple concept for the convex mirror and you understand it well. Take care of yourself, your parents, and stay safe at your home. As you know, weather is badly changing. Outside it is heavily snowing. So be in your comfort zone. Subscribe my channel and press the bell icon. आपको राइट टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना सिलेबस एट योर होम कंप्लीट करते जाओ. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.